क्योंकि यहाँ पे सारा जो रीजन में जो एक जो असल जो फसाद की जड़ थी वो 9/11 के बाद शुरू हुई अमेरिकन इंटरफेरेंस से। तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि अमेरिकन को कह दें कि जब तक आप इंडियन कॉन्सुलेट के मसले को सॉल्व नहीं करते तो हम आपकी जो यहाँ पे सप्लाई लाइन जा रही है कराची से जो उनका सारा सामान जाता है ये एक तो हम उसको बंद कर सकते हैं। इसका तरीका यही है कि हम डिप्लोमेटिकली करें, जो हमारी पार्लियामेंट है उसको हम इस्तेमाल में लाएं, गवर्नमेंट पर प्रेशर डालें, एक रेजोल्यूशन पास करें और कहें कि जी हम आपके साथ जो है ये ट्रांजिट ट्रेड और ये सारा जो उनकी जो सप्लाई है इसको हम खत्म करते हैं। एक तो तरीका ये है कि इसको आप हैंडल कर लें। दूसरा तरीका ये है कि फिर हम अपनी मर्जी से कहें कि ठीक है जी अगर आप अपने ड्रोन्स हमारे वजीरिस्तान में भेज सकते हैं जिससे 90% बेगुनाह लोग मरे मोस्टली, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि कहेंगे जी ठीक है हम भी जी बिल्कुल हम अपने F-16 भेज सकते हैं या हम हमारे पास भी ड्रोन टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज करके उन ट्रेनिंग कैंप्स को टारगेट कर सकते हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने में लगे हुए हैं। Actually, I will actually politely disagree कि जब तक हम लोग we do not secure ourselves from inside, we need to understand that we are an open society. Me, you, and Dan, anybody can actually go in to a police station or actually go into GHQ gate security, and if we know somebody inside, we can go access even though if it's a highly classified or secure area. So first we need to understand that we as a civil society or civilians or even as army personnel, we need to stop being an open society. We need to understand the security analysis that we have, that there are some certain precautions that will be taken. I will give you an example. In Islamabad, when you go in, if you have a small car, they will stop you, search you. But if you have a big car, no matter who you are, they will never stop you. Basically, आप किसी की Mercedes छीन के उसके अंदर बम रख के ले जाएं तो nobody is going to stop you. Nobody is going to stop you. Your police has to be trained. I'm coming back to my same point. Your police has to be capable enough to be recognized that this person that is coming in, no matter what plate he has, no matter what flag is on his car, he has to be stopped and searched because it is national security priority. He has to take his responsibility as our main front man in our intelligence, in our security. He has to be trained to go back and protect us. Do you think we should be making changes in our policy with regards to the US war on terror? हम लोगों को आप क्या समझते हैं कि ये जो जितने भी फॉल आउट हो रहा है अमेरिका के डिजास्टरस वॉर इन अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान पे गिर रहा है, इसको हैंडल करने के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंजेस करने चाहिए? We need to change our foreign policy drastically. It has to be changed to be flexible enough to negotiate on both sides. Right now, we are not negotiating, we are only accepting. We have to negotiate, okay, we can give you this. If they say, no, give us twice as much as you are providing us, then we negotiate. That is diplomacy. You do not say, whatever you're giving us, we're going to take it or we're going to reject it. We have to have good relations with the US, we have to have good relations with China and the rest of the world. We do not have any wrongful intentions against any of our neighbors. We want to live peacefully. But whatever the situation is, we have to make sure that on the negotiating table there has to be some flexibility. Especially in case of Afghanistan, we have to realize that if you go back in history, nobody has ever conquered Afghanistan. If you can go in every think tank, all the think tanks in the US, in the end of their 3-day, 4-day conferences, only thing they say is there is no military solution. Then why are they not going in and telling their administration that is next to like 2 blocks away in the White House that there is no military solution? अभी recently ये भी सुनने में आ रहा है कि American taxpayer money and even the European जो NATO के contingents हैं जो European countries के वहाँ पे उनके taxpayer का पैसा तालिबान को fund कर रहा है. We know from the last 2.5 years कि तालिबान control a majority of the country. 75% अफगानिस्तान पे तालिबान का control वापस आ गया. And by the way, this is the real Taliban. When we talk about Taliban in Pakistani sense, remember this, that Mullah Omar from Afghanistan has already distanced himself from Tehreek-e-Taliban Pakistan many times. In dono ka aapas mein koi ताल्लुक नहीं है. Tehreek-e-Taliban Pakistan is a very recent, in the last couple of years we've seen them emerge out of nowhere basically, and they attack Pakistani targets and they basically kill Muslims in Pakistan. Ab Mullah Omar ki jo Afghanistan Taliban hai, that the real Taliban basically, in logon ne they've given statements asking the Tehreek-e-Taliban Pakistan to come and join them in Afghanistan and stop fighting Pakistanis, but they've refused to do that basically, point blank. So I'll come to my question again.
the taxpayer money is landing up in with the Taliban, and it's strengthening them. So basically, how do you think, what's in store Well, for? that is a possibility. I'll give you an example. A British newspaper leaked yesterday that the Italian special services were actually providing money to the local Taliban, to the province where the Italian armed forces were securing. So for the last how many years they were securing that area, they were actually paying money to the Taliban that stay away from us, don't kill our people. We are under pressure from the United States to be here as we are part of NATO, and as we are part of European Union. We have to have a military presence, but we do not intend to fight. So they were actually paying money to Taliban not to engage them. And the best part what actually happened is, so they left that area and gave command over to the French. So the French came in very happy, thinking, oh, this is the most peaceful area. First they come out, they have the biggest loss ever. They had 8 people die, 8 of their soldiers die. And then people start to realize that what actually is happening, that the Taliban is growing very strong, and what we need to do is think there has to be a diplomatic solution. In the end, Alexander the Great could not do it, the Russians could not do it, and the Americans will never be able to do it unless they have a political solution. They get the people that actually live in Afghanistan to come out of their caves and come and take command of their country. You have to negotiate on both sides. Okay, we can't actually let them sponsor terror all over the world, if that is an allegation itself, but we need to tell them that we are here to help you, not to conquer you. Right. Okay, एक और क्वेश्चन था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था. अभी रिसेंटली खबरें आ रही हैं पिछले 1 महीने से कि इन्होंने अपना ट्रुप बिल्डअप फिर शुरू कर दिया बॉर्डर के, पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ इंडिया ने. तो डू यू थिंक कि दे एक्सपेक्ट पाकिस्तान टू रिटेलिएट इन अफगानिस्तान, जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि अफगानिस्तान से सारी फंडिंग आ रही है, वेपन्स आ रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है. तो इफ पाकिस्तान स्ट्राइक्स इंडियन कॉन्सुलेट्स इन अफगानिस्तान, ये जो ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं, तो डू यू थिंक दे आर एक्सपेक्टिंग दिस? डू यू थिंक दिस इज व्हाई दे हैव पुट देयर ट्रूप्स ऑन अलर्ट? इसमें 2 चीजें. एक तो ये है कि इंडिया की जब से वहां पे हुआ था बॉम्बे में अटैक, तो उसके बाद उन्होंने ट्रूप्स बिल्डअप शुरू किया था. वो एक्चुअली कंटिन्यू होता रहा है डिफरेंट फेजेस में. पहले उन्होंने एयरफोर्स का ट्रूप बिल्डअप किया, मिक्स और डिफरेंट जो उनके प्लेन्स हैं उनको उन्होंने फॉरवर्ड बेसिस पे ट्रांसफर किया. उसके अलावा 1-2 उनकी एयरफील्ड्स थी जिसको उन्होंने हरियाणा वगैरह में, उस रीजन में हरियाणा की प्रोविंस और यूपी की प्रोविंस में, जिसको उन्होंने दोबारा से उन एयर बेसिस को दोबारा से रिवाइव किया, रीस्टार्ट किया. तो वो ट्रूप बिल्डअप डेफिनेटली है. उन्होंने डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी किए. हमें इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है वो 87 में भी ट्रूप बिल्डअप उन्होंने किया, 2001 से लेके 2002 के जून तक उन्होंने किया. तो ये ट्रूप बिल्डअप से पाकिस्तान पे वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमें इतना ज्यादा इससे वो प्रेशर में नहीं डाल सकते. जहां तक ये बात है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो रिसेंटली अभी जैसे एक आर्टिकल आया था, उनके रिटायर्ड डिप्लोमेट है बंदरा कुमारा, उनका एक आर्टिकल आया था. तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो एक कन्फ्रंटेशन अब ज्यादा ओपन में आ रही है बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड यूएस, जिसमें इस वक्त इंडिया जो है वो यूएस की फुल सपोर्ट में है. तो उस कन्फ्रंटेशन से ये हो रहा है कि एक कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आ सकता है जिससे पाकिस्तान में कोई ड्रास्टिक एक्शन लेना पड़ेगा. वो क्या है, वो हमारी आर्मी, गवर्नमेंट सबको मिलकर डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा. क्या हम डिप्लोमेटिकली उसको हैंडल करेंगे, क्या हम जो हमारे पास एविडेंस जमा हुआ है रॉ की और इंडियन इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट का पाकिस्तान में दहशतगर्दी का, हम उसको क्यों नहीं लेके जाते सिक्योरिटी काउंसिल में या यूएन में, हम मीडिया के सामने क्यों नहीं लेके आते. तो हम किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं, वो अब हमें इस पे जो है वो एक फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा. ओके, पाकिस्तान और इंडिया के तो रिलेशंस ऑब्वियसली जब से मुंबई हुआ है, मुंबई अटैक, उसके बाद डाउनवर्ड स्पाइरल में हैं. लेकिन इंडिया के अभी रिसेंटली चाइना से भी रिलेशंस बहुत ज़्यादा अफेक्ट होना शुरू हो गए हैं. रोज़ाना ही तकरीबन कोई ना कोई नई स्टोरी होती है, कोई ना कोई नए मसले पर इन दोनों का आपस में क्लैश हो रहा होता है. तो हम मुबशिर, would you like to enlighten us on that? China is Pakistan's time-tested friend. Many scholars have actually said, like how Israel is to America, Pakistan is to China, but we never use China. We always think that, if we ask more, they will not give us, or we will hurt our relationship. Even from the day from Bhutto to Ayub
till now we haven't actually utilized our best friend who has actually time and testedly come to help us. We have to come back to them and say on mutual agreements that we need